क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं 2.6 का। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2 + 3 आयोटा प्लस 7 - 2 आयोटा। हमने उसको a+b आयोटा में सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 2 + 3 आयोटा प्लस 7 - 2 आयोटा। अब हम रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड कर देंगे। तो 2 + 7 + 3 आयोटा - 2 आयोटा, ये आपके पास आता है 9। 2 + 7 9 आएगा और उसके बाद ये आ जाएगा प्लस आयोटा। फिर आप क्वेश्चन 3 देखें तो -7 + 3 आयोटा इंटू -3 + 2 आयोटा, इसमें भी आप a+b आयोटा फॉर्म में जाएंगे। तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, इसको पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। -7 इंटू -3 -7 इंटू 2 आयोटा, then it would be plus 3 iota into -3 and plus 3 iota into plus 2 iota. So 7 3s are 21, minus minus plus, -7 2s are 14 iota, then it would be -3 is a 9 iota and plus 3 2s are 6 iota square. Now what is iota square? You write here dot and it would be equals to -1. Now what you will do, 21 minus and minus minus, you are going to add it, 24 and 9. So that would be equals to how much equals to, if you don't know, simply don't get problematic, just add them like this and you will get the answer. So that is 23 iota minus 6, or either plus and -1 you write here, either 21 minus 23 iota minus 6, or 21 minus 6 would be equals to 11. It would be equals to 15. So here 15 minus 23 iota. So now it is in the form of a+b iota, simpler simplified form. So don't forget to like, subscribe, share, comment my YouTube channel to get new and innovative content about maths.